I would like to introduce myself as well as Brandos. So I'm Dr. Sudhi Agarwal Kamboj. I'm a breast and endocrine surgeon, pass out from prestigious King George's Medical University and Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow. And I'm practicing here. I'm a founder and head Department of Breast and Endocrine Surgery at Nutima Hospital, Meerut, which is one of the leading hospital of Western Uttar Pradesh. And it's one of its own kind. This department is one of its own kind because it's the first and the only department dedicated for breast and endocrine services. I'm the pioneer of Brandos WUP. So Brandos WUP is the Breast and Endocrine Society of Western Uttar Pradesh. Though we have started it in the Western UP, so therefore it's named as Western Uttar Pradesh. But it has a pan-India, in fact, it has an international impact because we have participants from all over the country as well as abroad who have a special interest in breast and endocrine sciences. So here you all are with us who have the similar interest. ये हमारा टॉपिक है आज का, क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस मास्टाइटिस, और ये हमारी टीम है जो इस पे मंथन करेगी और हम इससे चर्न करके लाएंगे बहुत टेक्निक्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमें हेल्प करेगी हमारे पेशेंट की मैनेजमेंट में. So now friends, I'm sure you all might have dealt with the patient. They come with the chronic inflammation, large irregular lumps. And we know that these are the chronic inflammatory lumps. Though they may initially present like inflammatory breast cancer, but with initial investigation, you can very well rule out कि okay, these are not inflammatory breast cancer, but chronic inflammation. लेकिन फिर अगला चैलेंज आता है कि because they are not responsive to conventional treatment, आप उन्हें antibiotics देते हो, कोई response नहीं आता है. दूसरे, they present with abscesses. Either these abscesses ruptured spontaneously, forming chronic discharging sinuses of fistula, या because those are pus pockets आपको मिलती है to relieve the patient of pain or swelling. As a surgeon, we just incise and drain the abscess और वो हमारा नासूर बन जाता है because that wound doesn't heal. And we just scrub our scalp कि आप क्या करें, और we think कि okay, it could be tuberculosis, हो सकता है Indian setting में tuberculosis, we give them anti-tubercular treatment and they still don't respond. And even if we know that we are dealing with idiopathic granulomatous mastitis, we are again stuck कि okay, diagnose तो कर लिया लेकिन अब करें क्या, because we don't know how to give steroid, how to taper steroid, when should we give immunomodulators, when should we give intralesional steroid. सुना है कि intralesional steroid दिया जाता है लेकिन कैसे दिया जाता है we don't know. सुना है steroid दिया जाता है, सुना है antibiotic दिया जाती है, कौन सी antibiotic दी जाती है we don't know. So in this program today we are going to discuss everything about idiopathic granulomatous mastitis, जिसमें हमारा जो डिस्कशन होगा ये प्रैक्टिकल बेस्ड ज्यादा होगा सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इससे गेन कर पाए. दिस इज, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, इसको कम कैसे करूं, इसको कम, या ठीक है, नाउ इट्स ओके, फाइन. तो अच्छा, कोई भी बिल्डिंग खड़ी करने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम उसका बेस अच्छा सा तैयार करें. तो हम शुरू करते हैं पहले ग्रैनुलोमेटस मास्टाइटिस होती क्या है. सो फ्रेंड्स, वी ऑल नो जब भी एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, ज्यादातर ग्रैनुलोमास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बनते हैं. कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है तो वहां पे ग्रैनुलोमास बनते हैं. अगर ये इन्फ्लेमेशन ब्रेस्ट में हो और ग्रैनुलोमास बने तो वी कॉल देम ग्रैनुलोमेटस मास्टाइटिस. इट्स वेरी सिंपल. अब ये दो तरीके का होता है, अब ये दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी इडियोपैथिक ग्रैनुलोमेटस मास्टाइटिस और सेकेंडरी ग्रैनुलोमेटस मास्टाइटिस. प्राइमरी क्या होता है, व्हेन द अंडरलाइंग कॉज इज नॉट डिटेक्टेड बाय रूटीन पैथोजेनिक एग्जामिनेशन. और ज्यादातर केसेस में जब हम थक हार जाते हैं कि अच्छा अब तो कुछ मिला नहीं, तो हम सोचते हैं कि चलो यहाँ पे ये इडियोपैथिक ग्रैनुलोमेटस मास्टाइटिस हो सकता है. लेकिन जब आज का प्रेजेंटेशन खत्म होगा तो ये चीज थोड़ा हमारे दिमाग से निकल जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जिसको अगर हम हमारा पैथोलॉजिस्ट देखे या हम लैब इन्वेस्टिगेशन में देखें तो हमें उनसे आइडिया लग जाता है कि वी आर डीलिंग विद इडियोपैथिक ग्रैनुलोमेटस मास्टाइटिस. इट्स नॉट ऑलवेज द डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन. वी कैन वेरी वेल डायग्नोस बिफोर वी इम्पार्ट एनी अदर थेरेपी. अच्छा, दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रैनुलोमेटस मास्टाइटिस. अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, इन्फेक्शियस हो सकता है, नॉन इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस में ट्यूबरकुलर हो सकता है, नॉन ट्यूबरकुलर जैसे फंगल, एक्टिनोमाइसिटिस, पैरासाइट, हिस्टोप्लाज्मोसिस. और नॉन इन्फेक्शियस में जैसे कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस होती हैं, वस्कुलाइटिस होती है, वेगनस ग्रैनुलोमेटस मास्टाइटिस, जाइंट सेल स्क्लेरोजिंग लिम्फोग्रैनुलोमेटस, फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमेटस, जो हम सूचर्स कई बार टाई करते हैं वो लीव कर देते हैं, मेनी टाइम दे आर नॉट एब्सॉर्ब्ड, उनके अराउंड ग्रैनुलोमास बन जाते हैं.
ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सार्कोइडोसिस हो गया, फैट नेक्रोसिस बिकॉज ऑफ ट्रॉमा हो गया। तो इस तरह के केसेस भी हमें देखने को मिल जाते हैं। अब व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट, इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम डिफरेंशिएट करें? क्यों? क्योंकि इनके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो काफी सिमिलर होते हैं। ज्यादातर केसेस में हमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के फीचर्स मिलेंगे, पोस्ट डिस्चार्ज मिलेगा, नॉन रिस्पॉन्डिंग टू कन्वेंशनल ट्रीटमेंट मिलेगा। मिमिक कर सकते हैं इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर से, आपको लगेगा ऐसा तो नहीं हम कैंसर मिस कर रहे हो। ज्यादातर लोगों की मल्टीपल सर्जरीज होती हैं और एसोसिएशन होता है या तो ट्रॉमा से, या उनको निपल डिस्चार्ज का होता प्रॉब्लम, रेट्रोएरुलर डक्ट इन्वॉल्वमेंट होते हैं, या तो क्लिनिकली आपको वहां से निपल डिस्चार्ज मिलेगा, या फिर अल्ट्रासाउंड में आपको डायलेटेड डक्ट्स मिलेंगे, एक्टेटेड डक्ट्स। अब डिफरेंस करना क्यों जरूरी है इनके बीच में? इसलिए जरूरी है क्योंकि जो फंडामेंटल ट्रीटमेंट होता है वो एब्सोल्युटली डिफरेंट होता है सभी का। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि ये कौन से टाइप की ग्रेनुलोमेटस मेस्टाइटिस है। अब जैसा मैंने आपसे वादा किया था, इस बार जो हम स्टिक करेंगे इडियोपैथिक ग्रेनुलोमेटस मेस्टाइटिस। क्यों? क्योंकि इट इज वन ऑफ द पुअरली मैनेज्ड बिनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स अमंग द ब्रेस्ट सर्जन्स और जनरल पॉपुलेशन। ठीक है, इसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है, बहुत कम लोग जानते हैं, छित्री छित्री सी इंफॉर्मेशन है। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम इसको आज इस पे फोकस करके इसको आज इसका जो मैनेजमेंट है उसको क्लियर करेंगे। इसको अब इडियोपैथिक लोबुलर ग्रेनुलोमेटस मेस्टाइटिस कहते हैं या सिस्टिक न्यूट्रोफिलिक ग्रेनुलोमेटस मेस्टाइटिस, अलग अलग नाम है इसके। तो इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था 1971 में मिलर ने, क्योंकि he proposed the concept of granulomatous mastitis which present as breast lobules infiltrated with acute and chronic inflammatory exudate with a mass of foreign body giant cell। तो उसने ये इस कंसेप्ट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था और उसने बताया था कि इट इज अ रेयर chronic benign inflammatory disease of the breast। Now we know it is 1.8% of all benign breast diseases and around 1/4 24% of all inflammatory breast disorders, breast के जितने inflammation होते हैं 1/4 केसेस में IgM होता है। So ये इतना रेयर नहीं है, it's not that rare। ये हो सकता है कि most of the time we misdiagnose it or we fail to diagnose it। अब ये होता है चाइल्ड बियरिंग एज में, मीन एज होती है 35 ईयर्स, बट 11 ईयर्स में और 83 ईयर्स में भी इसके केसेस देखे गए हैं। हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी और नर्सिंग होती है ज्यादातर पेशेंट्स में। विद इन 6 months to 2 years ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग सिचुएशन ज्यादातर पेशेंट्स आते हैं। तो आपको उनका बच्चा 2 साल का, 3 साल का इस तरह से मिल सकता है कि अभी 2 साल का दूध पिला रहे हो सकते हैं, या उन्होंने हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ दी हो, लेकिन बच्चे छोटे होंगे इनके। हाई रिफ्रैक्टरीनेस टू ट्रीटमेंट एंड लोकल एग्रेसिव होते हैं, इनको कोई ट्रीटमेंट रास नहीं आता, किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करते और लोकली एग्रेसिव होते हैं। बड़ा सा दिखाई देगा, बड़ा सा मांस आपको दिखाई देगा, एक काफी बड़ा प्रोपोर्शन ब्रेस्ट का इन्वॉल्व होगा। जगह जगह पे आपको ये ऑपरेशन भी करना चाहो तो आपको समझ नहीं आएगा कि किस एरिया को ऑपरेट करें। दो बिनाइन, दे सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ। फाइनेंशियल बर्डन होता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल फेल ट्रीटमेंट। इस डॉक्टर से आराम नहीं, दूसरे डॉक्टर से आराम नहीं, तीसरे डॉक्टर से, दवाइयों का खर्च, इन्वेस्टिगेशन का खर्च, तो फाइनेंशियल बर्डन बहुत होता है। पोटेंशियल परमानेंट कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी, या तो स्पॉन्टेनियस पस डिस्चार्ज हो गया कहीं से, साइनसेस, फिशुलास बन गए, स्किन में स्कारिंग होगी, या सर्जरी हुई तो वहां डिफॉर्मिटी हो सकती है। तो परमानेंट कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटीज का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अब पैथोफिजियोलॉजी होता क्यों है ये बहुत सारी थ्योरीज है लेकिन कोई भी फुली अंडरस्टूड नहीं है। अब देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिनके बारे में वर्क किया गया, जिसमें हाइपोप्रोलैक्टिनीमिया है, प्रेगनेंसी हो गया, लैक्टेशन हो गया, जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन चलती है उनसे भी प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है, हाइपोथायरॉइडिज्म से प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या मेनी अदर ड्रग्स, किसी से भी जिस भी कंडीशन से प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ेगा वहां पे देखा गया है कि ये प्रॉब्लम बढ़ती है। स्मोकिंग, तो ये दो चीजें तो प्रूवन है, बाकी चीजों का थोड़ा सा सपोर्टिव एविडेंस है, जैसे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ट्रॉमा, डायबिटीज, ऑटो इम्यून डिसीजेस, तो इनका थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है कि हो सकता थोड़ा सा है और इसकी वजह से वो और फ्लेयर अप कर सकती है डिजीज। अब हम सारी थ्योरीज को सेंटर करें तो ये 3 मैकेनिज्म पे सेंटर हो जाएंगी। पहला है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून में ये थ्योरी पोस्टुलेटेड है कि ड्यू टू एनी रीजन, बिकॉज डक्ट्स आर ऑलवेज फिल्ड विद सम अमाउंट ऑफ सिक्रीशंस, ज्यादातर जो लैक्टेटिंग लेडीज जो ऑलरेडी मल्टीपेरस लेडीज होती है उनकी डक्ट्स में हमेशा डक्ट एक्टेटिक होगी और कुछ ना कुछ सिक्रीशन होगा जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ मिल्क हो सकता है ड्यू टू एनी रीजन, आइदर ट्रॉमा,
या इन्फ्लेमेशन, ये जो नॉर्मल डक्ट सिक्रीशंस है जब ये बाहर निकलते हैं तो मेनी टाइम्स दे सेंटर्ड अराउंड द लोब्यूल्स, वहां पे जब जाते हैं तो टी हेल्पर सेल्स हैं, बी रेगुलेटरी सेल्स हैं, ये दे ट्राई टू कम टू दैट एरिया टू लोकलाइज दैट इन्फेक्शन सो दैट इट डजंट स्प्रेड, और इस कंडीशन में वो एक लोकल ग्रैनुलोमेटस रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं जो नॉन कैजिटिंग ग्रैनुलोमास की तरह मिलता है। सो एक ये बहुत कॉमन थ्योरी है जो हर जगह हमें बताई जाती है कि डक्टल सिक्रीशंस है, ये जब सीप आउट या एक्सक्रीट हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, तब इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अब इसमें इंटरल्यूकिन 22, 23, रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर, एएनए एंड एंटी डबल स्ट्रैंड डीएनए एंटीबॉडी, ये पॉजिटिव थे। कुछ स्टडीज हुई हैं, रिसर्चेस हुए जिसमें उन्होंने पाया कि ये सारे पेशेंट जो आईजीएम के थे उसमें पॉजिटिव थे, चाहे या ना चाहे उनमें सिस्टमिक ऑटो इम्यूनिटी के फीचर्स थे या नहीं थे। चाहे उन्हें सिस्टमिक ऑटो इम्यूनिटी के फीचर्स थे, एरिथेमा नोडोसम था या कुछ और, लेकिन उनके में जब ये फैक्टर्स टेस्ट किए गए तो सभी में पॉजिटिव थे। तो मतलब ये प्रोन थे ये सारे पेशेंट्स किसी भी तरह के ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन के लिए। इसको दूसरी तरह से उन्होंने समझाया सेम कि हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो गया या कोई भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, किसी भी तरह से जब सिक्रीशन रिटेंशन होता है ब्रेस्ट डक्ट में या परमिबिलिटी बढ़ जाती है ब्रेस्ट की डक्ट की, जैसे ट्रॉमा हो गया या फिर इन्फ्लेमेशन हो गया, तो जो सिक्रीशन है फ्लो कर देते हैं लोबुलर मेसेनकाइम ऑफ द ब्रेस्ट में, वहां पे एक लोकल इन्फ्लेमेशन होता है। अब वहां पे टी लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस माइग्रेट करते हैं टू द पेरिफेरी ऑफ ब्रेस्ट डक्ट, बी लिम्फोसाइट माइग्रेट टू द पेरिफेरी ऑफ द ब्रेस्ट डक्ट, मतलब बी टी मैक्रोफेजेस, वहां डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है। तो एक तरफ तो होता है नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन और दूसरी तरफ जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो वहां से सेंसिटाइज होके जाते हैं और वो सिस्टमिक इलनेसेस करते हैं जैसे इरिथेमा नोडोसम, आर्थराइटिस, क्योंकि उनके कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। ठीक है, ये हमने बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से बताया। तो इसमें जो अल्टीमेट आया है कि रिटेन्ड डक्टल सिक्रीशंस और इंक्रीज डक्टल परमिएबिलिटी ड्यू टू एनी रीजन, ये इसके कॉजेज हैं। अच्छा, दूसरा जो मैकेनिज्म है वो है हार्मोनल, दैट इज हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। तो अकरेंस ऑफ ग्रैनुलोमेटस मैस्टाइटिस विदाउट ए हिस्ट्री ऑफ रीसेंट प्रेगनेंसी इज वेरी अनकॉमन। तो जैसे मैंने कहा ज्यादातर, अब आप दोबारा से उन पेशेंट्स को स्टडी करना तो आप पाएंगे कि ज्यादातर लोगों की रीसेंट हिस्ट्री या प्रेगनेंसी की रही है या लैक्टेशन की। 30% ऑफ पेशेंट्स में हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हमें कोई ना कोई एविडेंस मिलता है, या तो उसके प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई होंगे या उसके निपल से आपको गैलेक्टोरिया मिल सकता है। अब क्या हुआ है, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया ओवर मोटा मोटा हम ये समझते हैं कि जब प्रोलैक्टिन होता है, प्रोलैक्टिन ऑटो इम्यूनिटी को प्रमोट करता है, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया ऑटो इम्यूनिटी को प्रमोट करती है, जो हमारे केस में बिल्कुल वैलिड है। तीसरा है इन्फेक्शन। तो हमने सारी चीजों को बहुत सिंप्लीफाई किया। तीसरा इन्फेक्शन, अब इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म कंसिस्टेंटली आइसोलेट नहीं हुआ एक्सेप्ट कोराइनी बैक्टीरियम विच इज अ ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ये इस तरह से दिखता है। और इसमें भी स्पेशली कोराइनी बैक्टीरियम क्रोपेंसिटाई, जो हिस्टोलॉजी, जब भी इसका इन्फेक्शन की वजह से अगर आईजीएम होगा तो उसको सिस्टिक ग्रेनुलोमेटस मैस्टाइटिस के फीचर्स आएंगे जो हमारा हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हमें गाइड करेगा। और ये इन्फेक्शन कैसे होता है, ये इन्फेक्शन प्रोवाइड करता है कुछ नेसेसरी एंटीजेंस और मिमिक करता है ऑल्टरिंग सेल्फ एंटीजन लीडिंग टू इंक्रीज ऑफ ओवरऑल इम्यूनिटी रिएक्टिविटी लेवल और एन एंटीजन स्पिलेज। तो ये कुछ मैकेनिज्म है। इससे हमें क्या पता लगता है कि कोराइनी बैक्टीरियम का बहुत ही क्लोज एसोसिएशन है आईजीएम के साथ। लेकिन इसके अलावा कुछ और बैक्टीरिया है जैसे माइकोबैक्टीरियम, ये भी एक अच्छी गुड अमाउंट में पाए जाते हैं, जो एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया से ये भी इस तरह के केसेस में पाए जाते हैं, ये रिपोर्टेड है लिटरेचर में। अब पेशेंट प्रेजेंट करता है, ज्यादातर केसेस प्रेजेंट करते हैं क्रॉनिक एब्सेस और इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर एट फर्स्ट इंस्टेंस। आप एकदम से देखोगे आपको लगेगा कहीं मैं इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर तो डील नहीं कर रहा, या हो सकता है पेशेंट कहे कि पहले चोट लग गई थी, उसके बाद से दवाई चल रही है, ठीक नहीं हुआ, और आप सोचोगे कि हो सकता है उसको एब्सेस डेवलप हो, इसको मेडिसिन देते रहे, अब वो ऑर्गेनाइज होकर एंटीबायोमा बन गया। तो ये माइंड में पिक्चर आ सकती है आपको। पेशेंट को इरिथेमा हो सकता है, मास हो सकता है, फिशुला हो सकता है, साइनस हो सकते हैं, स्किन में रिट्रैक्शन मिल सकता है,
अल्ट्रासाउंड में एब्सेस मिल सकता है या क्लिनिकली, और इंड्यूरेशन मिल सकता है। ये कुछ कॉमन फाइंडिंग्स है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखने की है, अगर आप इस पिक्चर को क्लियरली देखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम द इन्वॉल्वमेंट इज पेरिफेरल एंड नॉट सेंट्रल, तो निपल इज रेयरली इन्वॉल्व्ड। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। फीवर इज यूजुअली एब्सेंट, ज्यादातर लोगों को फीवर नहीं होगा, बहुत ही माइल्ड फीवर की कंप्लेन करेंगे, तो जो ट्यूबरकुलर मास्टाइटिस वाली टिपिकल फीवर होगा वो यहाँ नहीं मिलेगा आपको। और 1/3 केसेस में सिस्टमिक ऑटो इम्यून सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे इरिथमा नोडोसम हो सकता है, ऑटो उसको हो सकता है कि पैरों में या कहीं पे पेनफुल टेंडर रेड नोड्यूल्स हों, ऑटो इम्यून आर्थरेल्जिया या आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द हो सकता है, कंजंक्टिवाइटिस, थायरोइडाइटिस के फीचर्स मिल सकते हैं। अब देखिए मेल्स में ये रेयर होगा, बिकॉज लाइक मेल्स में तो ब्रेस्ट टिश्यू इज वेरी लेस, बट इट मे प्रेजेंट, इट इज रेयर, बट इट मे ऑल्सो it may present. This is one of my operated case, which I operated around 10 years back, and that patient is still doing good, but it's a very rare condition where I found a chronic inflammatory breast condition in a male patient. So peripheral tissues में ये 50% केसेस में पेरीफेरी में इन्वॉल्व होता है। देखिए इसका निपल यहाँ है इस पेशेंट का, और इसका जो इन्वॉल्वमेंट है ये पेरीफेरी पर है। सो पेरीफेरल इन्वॉल्वमेंट इज 50%, सब एरियोलर इज 25%, डिफ्यूज ग्रेनुलोमेटस मास्टाइटिस इज 25%, और रीजनल लिम्फेडेनोम 15% केसेस में हमें रीजनल लिम्फोनोड्स मिल सकते हैं। ओके ज्यादातर केसेस में यूनिलेटरल होता है 2/3 केसेस, बट 25% केसेस में बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्रोनिक इन्फेक्शन की तरह प्रेजेंट किया तो आप सोच में पड़ जाओगे कहीं मैं टीबी तो नहीं डील कर रहा। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में हमें लग सकता है कि हिस्टोप्लाज्मोसिस, एक्टिनोमाइकोसिस हो सकती है। अगर निपल के पेरी एरोलर एरिया में वो तो हमें लग सकता है कि हो सकता है पेरी डक्टल मेस्टाइटिस हो। अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के साथ है तो हमें लग सकता है कि ओके सार्कोइडोसिस, वैगनस, कुछ भी हो सकता है। या हो सकता है हमें लगे कि एक्यूट एब्सेस है विद एंटीबायोटिक्स, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू एंटीबायोमा, या इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, डायबिटिक फाइब्रस मेस्टोपैथी, फॉरेन बॉडी रिएक्शन, फैट नेक्रोसिस। तो ये सारी चीजों में से वी हैव टू रूल आउट द अदर कॉजेज टू अल्टीमेटली डायग्नोज दैट वी आर डीलिंग विद IgM. सो द डेफिनेटिव डायग्नोसिस डिसीज रिलाई करती है, किस पे रिलाई करती है, हम कैसे पहचानेंगे, इन सब से कैसे रूल आउट करेंगे। फर्स्ट इज इमेजिंग, जिसमें अल्ट्रासाउंड सबसे इंपॉर्टेंट है। देन इज कोर नीडल बायोप्सी, अगर सॉलिड एरियाज है इट्स ऑलवेज गुड टू गेट कोर नीडल बायोप्सी, जिसकी डिटेल अभी हम डिस्कस करेंगे। देन कल्चर्स, अगर एब्सेस है तो उसके कल्चर्स, उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, और सीबी नेट जिसमें कि हम टीबी DNA देखते हैं, और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अब आते हैं इमेजिंग की बात। इमेजिंग में इमेजिंग का क्या रोल है। पहले नंबर तो पेशेंट आता है और हम इमेजिंग कराते हैं तो हमें डिफरेंशिएट हो जाता है कि वेदर वी आर डीलिंग विद इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर और अ क्रोनिक एब्सेस। उसके क्या इमेजिंग फीचर्स होते हैं ये अभी हम डिस्कस करेंगे। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरियाज ऑफ बायोप्सी, अगर सॉलिड एरियाज है तो हम बायोप्सी प्लान कर सकते हैं। अगर वहां पर एब्सेस है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरियाज फॉर एस्पिरेबल एब्सेसेस फॉर आवर कल्चर्स। और हम साइज एंड टोपोग्राफ कर सकते हैं लीजन्स फॉर इंटरवल फॉलोअप्स। एनी हाउ वी आर गोइंग टू गिव ट्रीटमेंट, तो हम उसको एरियाज को डिफाइन कर सकते हैं और उन एरियाज को आगे फॉलो कर सकते हैं आफ्टर टू सी द ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स। और हमारी मोडालिटीज हैं अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मैमोग्राफी और MR मैमोग्राफी। नाउ लेट्स सी। ओके या सॉरी, तो अब अल्ट्रासाउंड, फ्रेंड्स प्लीज माइंड इट, अल्ट्रासाउंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, एंड इट्स एक तो पहले हैंडी है, दूसरा इसमें कोई रेडिएशन एक्सपोजर नहीं है। अगर हम इन सब चीज, और चीप होता है, अगर इन सब की बात छोड़ भी दे तो इसमें जिस तरह का विजन होता है, जो एरियाज की टाइपोग्राफी हम कर सकते हैं वो ना एक्सरे मैमोग्राफी में कर सकते हैं ना MR मैमोग्राफी में कर सकते हैं। सो इट इज आवर फर्स्ट मोडेलिटी ऑफ चॉइस फॉर ऑल एज ग्रुप। सो इसमें क्या हमें दिखेगा, इसमें हमें इरेगुलर हाइपो इकोइक लीजन, ट्यूबुलर एक्सटेंशन दिखेगी, क्योंकि ब्रेस्ट जो एब्सेस होगा, जो लिक्विड पार्ट होगा वो ट्यूब्यूल्स की तरह जहां उसको स्पेस मिलेगी यूजुअली वो वहां पे सीप आउट करने की कोशिश करेगा। इट्स अ मोस्ट कॉमन फाइंडिंग। इसके अलावा आइसोलेटेड हाइपो इकोइक और हेट्रोजीनियस लीजन्स मिल सकते हैं, छोटे छोटे से पॉकेट्स मिल सकते हैं। तो या तो आपको ट्यूबुलर एक्सटेंशन मिलेगा एब्सेस का, या छोटे छोटे पॉकेट्स मिलेंगे। एक्सरे मैमोग्राफी नॉट वेरी यूजफुल स्टैंड अलोन इन्वेस्टिगेशन। सिर्फ एक्सरे मैमोग्राफी करा के हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस पर आपको एक हाइपरडेंस लीजन दिखाई देगा और आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि इसका जो एग्जैक्ट नेचर है, क्या ये सिस्टिक है, सॉलिड है, ये आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो वी हैव टू कॉम्प्लीमेंट इट विथ एन अल्ट्रासाउंड।
MRI का रोल क्या है? MRI का कॉम्प्लीमेंट्री रोल है। जब हमारी ना अल्ट्रासाउंड ना कभी ऐसे भी केसेस हमें मिल सकते हैं जिसमें कि एकदम क्लियर कट फीचर्स ना हो और वी आर स्टिल डाउटफुल, तो एनी हाउ वी फर्स्ट वांट टू रूल आउट इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर बिकॉज इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। तो जब कोई भी फाइंडिंग्स हमें स्पेसिफाई नहीं करती कि वेदर वी आर डीलिंग विद ग्रेनुलोमेटस मेस्टाइटिस और इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, देन वी टेक द हेल्प ऑफ MRI, जिसमें हमें नॉन मास लाइक एनहेंसमेंट मिल सकता है और इसमें जो टाइम सिग्नल इंटेंसिटी कर्व है वो हमें हेल्प कर सकते हैं कि इसका कर्व टाइप 3 है, टाइप 2 है या टाइप 1 है, बट वो 100% डेफिनेटिव नहीं होती, तो कई बार हमें बाकी दूसरे एविडेंसेस से हेल्प लेनी पड़ती है। So now I request our colleague, our co-speaker, Dr. Chani, to tell us how we should proceed with our laboratory examination and what are the histopathological findings of such areas, of such lesions. Thank you, ma'am. So, as we listened to Dr. Sudhi, there are the causes of granulomas are granulomatous mastitis are many. So, we need a holistic approach in cases in which granulomatous mastitis is suspected. So, first is laboratory examination. So, we should go for a routine blood test, ESR, erythrocyte sedimentation rate, PPT test, then inflammatory markers like C-reactive protein, serum prolactin, serum thyroid and calcium, immunological examination such as ANA profile and rheumatoid factor and serum ACE levels. Then testing tissue for the presence of growth of Mycobacterium tuberculosis. Because it is a diagnosis, IgM is a diagnosis of exclusion, we need to rule out tuberculosis. Should be performed for patients with suspected tuberculosis versus PPT of tuberculin test could be useful in ruling out TB and for diagnosis of latent TB while deciding to prescribe immunosuppressant medication to GLM patients. DNA test of Mycobacterium tuberculosis helps to distinguish tuberculous granulomatous mastitis. So, if a patient has come, the patient is suspected for granulomatous mastitis, then a specimen from breast abscess, which could be aspirated pus, we should go for AFB staining, gram staining for Corynebacterium, CB-NAT, and pus culture and sensitivity. As we will see in the further slides, cystic neutrophilic granulomatous mastitis is also one of the causes of granulomatous mastitis. The positive bacteria is Corynebacterium and ma'am, previous slide. Sorry. So, which is a very fastidious organism and difficult to culture. So, they should be put on media encouraging growth of lipophilic bacteria such as polysorbate, and all the pus from breast abscesses can be incubated for 5 days as a routine. And then tissue diagnosis by core biopsy. Now, if we see histopathology on Ross examination in cases of idiopathic granulomatous mastitis, we find a palpably distinct mass with ill-defined margins. Cut surface is grey to tan with faint nodular architecture, and frequently, as the same as clinical presentation, we find abscess sinus formation and purulent foci. Purulent foci is a very common finding which I have personally seen in many of the specimens. And on microscopic examination, a classical presentation is lobulocentric granulomatous inflammation. This is one of the most important features. If you see on the right side, the top photomicrograph, there is a lobule. It is not very clear because there is a lot of infiltration by chronic inflammatory cells. And if we see this arrow is there, here if we can appreciate giant cells, this vague granuloma is there centered on the lobule. So this is a lobulocentric granuloma, which is a very important indicator for idiopathic granulomatous mastitis. Then granulomas in case of IgM can contain neutrophils. There can be neutrophilic microabscesses. Now, one of the problems is extensive inflammation may obliterate lobulocentric distribution. This creates a problem for the pathologist because in such cases, the lobulocentric distribution cannot be appreciated, and then it becomes difficult to differentiate from other pathologies. Cageous necrosis is absent in IgM, which will, as we all know, will be seen in tubercular etiology. And Schaumann and asteroid bodies are uncommon, which we find mostly in sarcoidosis.
So the cornerstone of all these causes is a granuloma. So what is a granuloma? It is a specialized immune response against various inflammatory insults. Now, it is a chronic active inflammation, which is chronic and active at the same time, and it is histologically characterized by central collection of epithelioid histiocytes and a rim of plasma cells and lymphocytes around it. If we see the photomicrograph, left side, we can see there is a central collection of epithelioid cells, which have a slipper-shaped nuclei, if you are able to appreciate, and the collection is surrounded by a rim of lymphocytes and plasma cells. These small blue dots, all of these are lymphocytes and plasma cells. Then central necrosis or suppuration will be seen depending on the etiology. Next slide. Differential diagnosis of granulomatous mastitis. So if we are looking for immunological causes, granulomatous lobular mastitis has to be differentiated from sarcoidosis. In case of GLM, it is centered on lobules, whereas sarcoidosis will have widespread distribution. In GLM, granulomas may not be well formed, but they are very, very well formed tight granulomas in sarcoidosis. There is associated inflammation in GLM, but in sarcoidosis frequently lacks extensive accompanying inflammation. So the term uses naked granulomas because only epithelioid histiocytes are there and giant cells are there, and usually lacking the inflammatory component. And GLM may have associated fat necrosis and abscess, which we frequently encounter. But in sarcoidosis, it will be a clean picture when necrosis and abscess is very rare. Now, second DD is differentiate GLM from mammary duct ectasia. So, GLM, as we know, is centered on lobules, whereas mammary duct ectasia, it is usually associated with larger ducts. Second important differential is tubercular mastitis, or rather we should say the first important differential for IgM is tubercular mastitis, especially in endemic area like India. So if we see the classical picture, then in IgM lobules are affected. In tubercular mastitis, any component of breast tissue is affected. So the distribution of first thing we have to look as pathologists is the distribution of the granulomas. Second, caseation necrosis will be absent in idiopathic granulomatous mastitis, and it is present in tubercular mastitis. We can see this in the photomicrographs also. In the left side, in the right side, the photomicrograph, it is showing dense pink material within the granuloma, that is caseous necrosis. Then more plasma cells will be seen in IgM, where in tubercular mastitis, more necrosis and eosinophils are there. And all these are, there can be subjectivity in these features, but most important is isolating the bacteria either through or recognizing it either through AFB, TB-PCR or CBNAT. All of these, if they'll be obviously negative in idiopathic and they'll be positive in tubercular mastitis. Another very important entity, and maybe it is considered to be rare, maybe it is rare due to underdiagnosis, is the cystic neutrophilic mastitis. It will also have clinical presentation similar to IgM. There will be erythema, redness, abscess formation, and very tender lesions will be there. On histopathology, we find suppurative lipogranulomas in which there is a central cystic cavity, as we can see in the photomicrograph, and it is surrounded by epithelioid histiocytes and also polymorphs in many cases. Most important feature is gram-positive rods of Corynebacterium species, especially Corynebacterium propinstedii, which is a positive organism in these cases. The problem with this bacteria is it is difficult to detect and culture. Usually, the quantity is very sparse in the lesions, so it is very difficult to detect on microscopy, and it is a fastidious organism. Takes long time to grow for colony formation, so it needs a longer incubation. So required culture medium should contain 1% polysorbate or 2-in-80 and longer incubation periods. Thank you very much, Chani.
सो द थिंग इज कि व्हाई वी हैव कंसर्न्स विद आईजीएम, हम इसके साथ कंसर्न क्यों है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ फियर ऑफ मैलिग्नेंसी। जैसे ही पेशेंट प्रेजेंट होता है, पेशेंट के दिमाग में भी है कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, हमारे दिमाग में भी है कि कहीं पेशेंट कैंसर लेके तो नहीं आया, तो फियर ऑफ मैलिग्नेंसी है। देन क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यू टू पेन, टेंडरनेस, वुंड डिस्चार्ज, मतलब पेशेंट की लाइफ है ना, इट्स नॉट गुड, दो इट इज बिनाइन बट इट्स नॉट गुड। थर्ड है ब्रेस्ट डिफॉर्मिटी, ये चीजें हमने पहले डिस्कस किए हैं। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट आया तो सबसे पहले ही जब आप इमेजिंग कराते हो तो ज्यादातर केसेस 2/3 और मे बी 80-90% केसेस में you are able to differentiate whether you are dealing with inflammatory breast cancer which looks like an irregular mass, hypoechoic mass with a posterior acoustic shadowing। तो आपको पता लग जाता है कि ये इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर है, या आपको ट्यूबुलर ब्रेस्ट लाइक ट्यूबुलर एब्सेस लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, तो आप वहां डिफरेंशिएट कर लोगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फीचर। देन कम्स, और अल्ट्रासाउंड इज अ वेरी चीप इन्वेस्टिगेशन। इंपॉर्टेंट इज कि ब्रेस्ट सर्जन must work in very close association with the radiologist so that we don't miss out any investigation finding। अच्छा, दूसरा हमारा जो डिफरेंशियल है दैट इज इन्फेक्टिव मेस्टाइटिस, की पेशेंट को चोट लगी हो, उसके बाद इन्फेक्शन हो गया हो, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट्स उस वक्त या तो लैक्टेटिंग होते हैं या इमीडिएटली दे हैव सीजर, उन्होंने अपना लैक्टेशन छोड़ा होता है, नर्सिंग मदर्स होती है, तो ये होता है कि कहीं लैक्टेशन इंड्यूस मेस्टाइटिस ना हो, तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सबसे पहले तो पस कल्चर से, जो 40% ऑफ केसेस में पॉजिटिव होता है, तो वी नो 60%, 2/3 केसेस में कई बार कल्चर पॉजिटिव नहीं भी होते, but by the time you are investigating, it's always wise that we start them on broad spectrum antibiotics covering almost all the bacteria that may cause some infection, and so that by the 3 to 5 days जब तक पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन हो रही है तब तक यू सी द रिस्पॉन्स। तो उसमें जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराते हैं, ग्राम पॉजिटिव कोकाई मिल सकते हैं, अदर एटिपिकल कॉजेज माइकोबैक्टीरियम, इकाइनोकोकस, एक्टिनोमाइसिस मिल सकते हैं, रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन मिलते हैं। बट एनी हाउ ज्यादातर केसेस में हम जब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल्स लगाते हैं तो पेशेंट अच्छा एक रिस्पॉन्स शो करता है, विद इन 5 days हमें आइडिया लग जाता है। दूसरा इडियोपैथिक ग्रेनुलोमेटस मेस्टाइटिस यूजुअली नॉन इन्फेक्टिव होता है एक्सेप्ट जब उसका कोराइनी बैक्टीरियम के साथ कोई एसोसिएशन हो। ज्यादातर कल्चर्स नेगेटिव आते हैं एक्सेप्ट फॉर जब हम कोराइनी बैक्टीरिया के लिए स्पेशली ग्राम स्टेनिंग या कल्चर्स लगवाएं, नहीं तो हमें एक जो दूसरे फीचर्स हैं जैसे सिस्टिक न्यूट्रोफिलिक ग्रेनुलोमेटस मेस्टाइटिस, हमें इनका सहारा लेना पड़ता है। और ज्यादातर केसेस जो कन्वेंशनल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल्स को रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो ये हमारे डिफरेंशिएटिंग फीचर्स है कि अगर 5 days में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जस्ट लीव इट, इट्स नॉट आइदर ये तो कन्वेंशनल इन्फेक्शन नहीं है या ये हो सकता है ऑर्गेनाइज हो चुका है। Then comes periductal mastitis, which is a very important differential diagnosis। अब देखिए इसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज जो पेरिडक्टल मेस्टाइटिस होती है, इसको हम प्लाज्मा सेल मेस्टाइटिस, कोमेटोमेस्टाइटिस, मेस्टाइटिस ऑब्लिटेंस, जिसका डिजीज, बहुत सारी चीजों से हम इसको जानते हैं। इनकी इटियोलॉजी होती है कि ड्यू टू एनी रीजन जब ये डक्ट्स या तो ब्लॉक होती हैं या इन्वेजिनेटेड होती हैं और ये डक्ट्स डायलेट हो जाती हैं, तब वहां पे और उनका जो सिक्रीशन है वो सीप आउट करता है, तो ज्यादातर ये मेजर डक्ट्स में होता है। ये ज्यादातर होता है इडियोपैथिक आईजीएम, ये माइनर डक्ट्स में होता है, तो इसलिए ये पेरीफेरी में होगा, ये सेंट्रल में होगा। दोनों ही चाइल्ड बियरिंग एजेस में होते हैं। इसमें निप्पल का जो सिक्रीशंस है वो फ्लो आउट नहीं कर पाता, इसलिए डक्ट डायलेटेड होती है, डक्टल एक्टेजिया होता है। इसमें ये जरूरी नहीं है, ज्यादातर केसेस में डक्ट्स आर नॉट इन्वॉल्व, मोस्ट ऑफ द केसेस। इसमें जो हमें बैक्टीरिया मिलेगा स्टेफ ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकाई, एनारोब्स मिलेंगे। इसमें हमें जो मिलेगा कोराइनी बैक्टीरियम मिलेगा। इसमें सिस्टमिक फीचर्स मिलेंगे आईजीएम में, जैसे इरिथमा नोडोसम, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, उसको कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है या ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज हो सकती है, और ये ज्यादातर यूनिलेटरल होता है, जबकि पेरिडक्टल मेस्टाइटिस ज्यादातर बाइलेटरल होगा, आपको दोनों साइड टेंडरनेस मिलेगी। ज्यादातर केसेस में निपल में कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी मिल सकती है आपको, जैसे निपल कंजेनिटली इन्वर्टेड हो या बाद में इन्वर्ट हो गए हो किसी वजह से। और इसमें हमें सेंट्रल इन्फ्लामेशन मिलेगा, इसमें हमें पेरिफेरल पेरिडक्टल मेस्टाइटिस में सेंट्रल इन्फ्लामेशन, इडियोपैथिक ग्रेनुलोमेटस मेस्टाइटिस में पेरिफेरल इन्फ्लामेशन। सो प्राइमरी साइट होगा ये पेरिफेरी पर होगा, और इसका जो एक्यूट होगा लाइक लोकल विद सिस्टमिक सिम्टम्स। ओके, ये थोड़ा सा एक ग्रेडिंग सिस्टम है बट वी में नॉट, उसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये एक छोटा सा कंसाइज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है व्हाट्सोएवर जो अभी मैंने आपको बताया है। अब आते हैं इसके मैनेजमेंट पे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके मैनेजमेंट के 3 इंपॉर्टेंट उसूल है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सर्वेलेंस, सेकेंड इज मेडिकल मैनेजमेंट, थर्ड इज सर्जिकल मैनेजमेंट. अब किस कंडीशन में हमें कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. देखिए, जो ये IgM होता है, इडियोपैथिक ग्रैनुलोमेटस मैस्टाइटिस, इसका जो हिस्ट्री होता है, नेचुरल हिस्ट्री होता है, ये सेल्फ लिमिटिंग होती है. एक बार इंसल्ट हुई, एक बार सिक्रीशंस बाहर आए, वहां पे ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो गया एंड इट्स डन. वो जितना ज्यादा फ्लेयर अप होगा उतने ही ज्यादा सिम्टम्स आएंगे. वो जितने लॉन्ग ड्यूरेशन तक फ्लेयर अप होगा, सिक्रीशंस आउटपोर करते रहेंगे, उतने लंबे ड्यूरेशन तक हमें प्रॉब्लम आएगी और उतना ही ज्यादा इंटेंस पेशेंट को कंप्लेन होगा. लेकिन एक बार वो सीप आउट कर गए, जो ग्रैनुलोमा है, जो सिक्रीशंस है, उसको बॉडी ने कन्फाइन कर दिया, तो वो धीरे धीरे सेल्फ लिमिटिंग है, या तो उतना रहेगा या समय के साथ कम हो जाएगा. तो नेचुरल हिस्ट्री सेल्फ लिमिटिंग होती है. इसमें अगर स्मॉल, छोटे, पेनलेस, मिनिमली सिम्टोमेटिक लीजन्स है तो आप ऑप्ट कर सकते हो कि आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो, बट आफ्टर कंफर्मिंग द डायग्नोसिस. तो आप पेशेंट आया एक मिनिमली सिम्टोमेटिक लीजन करके, ब्रेस्ट लंप करके, आपने चेक किया, आपने देखा कि इसमें कोई कैंसर के फीचर्स नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस के फीचर्स नहीं है और इडियोपैथिक ग्रैनुलोमेटस मैस्टाइटिस के फीचर्स है, तो आप डिस्कस कर सकते हो पेशेंट को कि इसमें कोई खतरे की बात नहीं, क्या आप ऑब्जर्वेशन पे रखना चाहोगे, क्योंकि 50% केसेस रिजॉल्व हो जाते हैं 5 महीने से 2 साल के बीच में, छोटे लीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट एडमिनिस्ट्रेट, चाहे आप ट्रीटमेंट दें या ना दें. इनके पेशेंट में अगर वो ऑब्जर्वेशन को ऑप्ट करते हैं तो 2 से 3 मंथली आप उन्हें ऑब्जर्वेशन पे बुला सकते हैं. इन केस आपको लगता है कि परेशानी बढ़ रही है, देन तो सर्टेनली वी हैव टू इनिशिएट सम ट्रीटमेंट. अगर वो उतने हैं या उससे कम हो रहा है और पेशेंट कंफर्टेबल है, तो हम उसको आराम से ऑब्जर्वेशन पे रख सकते हैं. देयर इज नो कंसेंसस फॉर रेडियोलॉजिकल सर्विलेंस, और हम एनुअल मैमोग्राफी या सोनोमैमोग्राफी 3 to 6 मंथली डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट कंडीशन करवा सकते हैं. Okay, so this is what is recommended. So whatsoever आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, these are based on recommendations. So after the presentation, in the group, in the Brandos group, we will share all the related articles or literature through which we have referred all these information. So you can very well go ahead and go through those literatures. Okay, so हमारा जो medical management बहुत important है. Medical management में 4 important pillars हैं. एंटीबायोटिक्स, एंटीप्रोलैक्टिन थेरेपी, क्योंकि अब आपको इन सारी चीजों का मकसद समझ में आ गया होगा. जो मैंने कहा था कि इन्फेक्शन है उसका एक कॉज, 3 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म. तो एंटी इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, हाइपरप्रोलैक्टिन के लिए एंटीप्रोलैक्टिन थेरेपी, और ऑटो इम्यूनिटी के लिए स्टीरॉइड्स और इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स. तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे को स्पीकर. ओके, एंटीबायोटिक मैं बता देती हूँ. देखिए, कोराइनी बैक्टीरियम से अब आपको पता लग गया कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, कोराइनी बैक्टीरियम. तो ये एक लाइपोफिलिक ये एक बहुत ही फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म है, ग्राम पॉजिटिव बेसिला है. इसके लिए हमें लाइपोफिलिक एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ेगी. वो कौन कौन सी है? डॉक्सीसाइक्लिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रिफैम्पसिन. डॉक्सीसाइक्लिन यूजुअली 100 to 200 ट्वाइस डेली डोजेस में देते हैं, लॉन्ग टर्म थेरेपी आराम से चला सकते हैं. रिफैम्पसिन हमें पता है 6 से 9 महीने, 12 महीने भी आराम से चलती है. तो अब अगर कई लोगों ने ये सोचा है कि इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है और ज्यादातर केसेस को हम एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देते हैं, वो रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, तो उनके लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि ये एंटिटी है, ये भी रिफैम्पसिन को रिस्पॉन्ड करती है. तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप एक IgM को ट्यूबरकुलोसिस समझ के ट्रीट कर रहे हो, वो रिस्पॉन्स भी दे रही है, बिकॉज इन दोनों की जो कॉमन मेडिसिन है वो है रिफैम्पसिन. इसको हम देते हैं 300 मिलीग्राम ट्वाइस डेली फॉर 6 to 9 मंथ. ये मोनोथेरेपी चलती है. एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट में हम कॉम्बिनेशन थेरेपीज देते हैं, है ना, और ये 6 to 9 मंथ्स के करीब चलती है. 70% रेजिस्टेंट रेट विद पेनिसिलिन लाइक मेडिसिन का रेजिस्टेंट होते हैं, तो वो हम यूजुअली नहीं देते हैं. और पेन रिलीफ के लिए हम एनसेड्स दे सकते हैं, जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है. एंटीप्रोलैक्टिन थेरेपी देनी बहुत जरूरी होती है, खासकर जिसमें कि हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के फीचर्स हैं या रिसेंट लैक्टेशन की हिस्ट्री है, जिसके लिए ब्रोमोक्रिप्टिन, कैबल्डोलिन दे सकते हैं. अब ब्रोमोक्रिप्टिन क्या है कि ये बहुत अच्छी मेडिसिन थी, लेकिन अब उसके बहुत अच्छे कंजेनर्स आ गए लाइक कैबल्डोलिन. तो ब्रोमोक्रिप्टिन के साथ पोस्चरल डिजीनेस या वॉमिटिंग की बहुत कंप्लेन होती थी, जो कैबल्डोलिन के साथ नहीं होती है. इसको 0.25 ट्वाइस वीकली एट बेड टाइम हम आराम से दे सकते हैं. तो इससे बहुत ही ड्रामेटिक रिजल्ट्स रहते हैं पेशेंट को, और इसको हम अलोन दे सकते हैं या कॉम्बिनेशन विद स्टीरॉइड्स. सो नाउ आई रिक्वेस्ट आवर को स्पीकर डॉक्टर अंकित टू टेक ओवर एंड जस्ट टेल अस अबाउट कि हाउ he would just tell us about the steroid
मैनेजमेंट एंड द जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स होते हैं उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं इस इडियोपैथिक ग्रैनुलोमेटस मैस्टाइटिस में. ओवर टू यू डॉक्टर अंकित प्लीज. Thank you, Dr. Sudhi. As elaborated very nicely by Dr. Sudhi and Dr. Chani, what is the pathogenesis, what is the manifestation, and what are the clinical features? So I will draw your attention to the medical management of patient with idiopathic granulomatous mastitis. Whenever we think of any autoimmune disease, any idiopathic granulomatous disease, the first thing that comes to our mind is steroids. And if I take you back to 1948, it was the first year when steroids were discovered. And at that time, there was no treatment for any autoimmune disease. And when these were discovered, it was a miraculous change seen in field of immunology. And since then, steroids are being used for treatment of autoimmune diseases, idiopathic diseases, left, right, and center. For granulomatous mastitis also, it is the first line of treatment which is used. Early recognition and administration of steroids may delay progression to invasive disease. The concept we use in immunology is hit early and hit hard, so that we can prevent the complication of uncontrolled autoimmunity. And if we consider in idiopathic mastitis, if we delay the treatment, there will be more damage and surgery will be more disfiguring. So early treatment prevents that. The steroids, they can be used as oral therapy, topical steroids, and intraregional injections. So there are pros and cons of all the routes which we can use. Coming on to the oral and systemic steroids, there are a lot of studies on treatment with systemic and oral steroids in granulomatous mastitis. The response rate varies from 72 to 80%, depending on what preparation is used, what dose is used, and what duration these drugs are used. Most of the study, they indicate a remission in over 5 to 10 months. But the main problem with steroids is the side effects, which include weight gain, hyperglycemia, myopathy, osteoporosis, avascular necrosis, cataract, immunosuppression, and dyspepsia. And it's a 25, 30-year-old girl, if you give steroids for 1 year, which include high-dose steroids, and if you tell those side effects beforehand, she might not be willing to take it at all. So these steroids side effects, they are not critical, but we need to take care of the side effects, because sometimes the effect is not seen immediately, but after 2 to 3 years or 5 years, when the patient comes with a hip pain or develops a cataract, and then the patient might come back to you and tell that what you have done. So we need to be very careful while using steroids. Next slide, ma'am. This is a common question which I used to be asked, like which one to use: methylprednisolone, prednisolone, cortisone, hydrocortisone, dexamethasone. So this is just a chart to show the conversion of different steroid preparations and their relative doses. If we talk about the potency, according to the potency, dexamethasone is the most potent one, but most commonly used is prednisolone because it is shorter acting. The dexamethasone is a fluorinated corticosteroid. It is a long-acting steroid. So the problem with long-acting steroid is higher HPA axis suppression. So if we need profound immunosuppression, then probably dexamethasone is a better choice. Advantage with that is there is no mineralocorticoid effect. However, normally, when we treat, prednisolone is the most commonly used steroid which we use. Next slide. Then there is always a discussion of dose of steroid: low dose, high dose, medium dose. What does it stand for? So this is a generally accepted classification for steroid dose. Low dose, usually we call it less than 7.5 milligram prednisolone equivalent per day. So most of the drugs whenever we talk of steroid dose, like 1 milligram per kg, 5 milligram per kg, whatever we use, that is related to prednisolone equivalent. Medium dose is 7.5 to 30 milligram. High dose is 30 to 100 milligram. Very high dose is more than 100, and more than 250 milligram is called a pulse steroid. The advantage of a pulse steroid is that there are two mechanisms of action: genomic and non-genomic. So the non-genomic effect, they act immediately within a few minutes. So if there is a life-threatening situation, then yes, pulse therapy is the answer.
But if we can manage, like in this granulomatous mastitis, there is no emergency, we can use lower doses as well. Again, topical steroids, topical steroids advantage is that there is no systemic effect. But the flip side will be that they will be effective only in topical, only in the dermatological manifestation, like there is edema, there is inflammation of the skin. So they will be helpful in healing of ulcers, fistulas, sinuses, or erythema. But systemic side effect will be less. However, they might not have a role in deeper inflammation. So if the patient is having a mass with cutaneous manifestation, we have to supplement it with a systemic steroid. There are many studies for local topical steroids which suggest a recurrence rate of 10 to 20%, which is almost equal to other therapy. Now, the point which is important here is if we see the literature, most of the studies, these are very heterogeneous studies, and the patients in which topical steroids have been used, they tend to have a disease with a lower burden, which are not very severe and limited to the cutaneous part. So anyways, the response is according to that. If we use only topical steroid in a patient with a high burden of disease, it might not be useful. Intralesional steroids, I think Dr. Sudhi will be a better person to tell because she has been doing this therapy for a long time. I'll just touch upon the various preparations which are available for injections. We have triamcinolone acetonide, hexacetonide. For intra-articular injections, we use hexacetonide because it stays in the longer in the joint. But most of the literature, they suggest to use triamcinolone acetonide, which is Kinocort, which is available. So those are used for treatment of these diseases. Another point I want to make is that many a time we are of the opinion that if we use intralesional steroids, the systemic side effect will not be there. Actually, that is not exactly the case. Whenever we give intralesional steroids, systemic absorption does happen. It is similar to an IM injection of steroid. But what we have observed is when we give intra-articular injections, the drug stays in the joint more and the local effect of the drug is more. So giving intralesional steroids may have systemic effect, but the local effect is much better as compared to oral steroids. Can you go to the previous? So it is a very interesting story. In 1948, when steroids were developed, so everybody was in a euphoria and everybody thought that we have conquered rheumatology and we have conquered rheumatoid arthritis. After 10 years, these patients started presenting to the OPDs with these sort of lesions, skin lesions, buffalo hump, Cushing's, cataract, AVNs, and then they realized that the problem with it is the problem with the compound E which is causing all this. And since then, the race has started to find out the solution, find out a drug which can have an effect equal to steroid and without any side effects. So the race goes on till now, and still we have no match to steroid, which are our only friend during emergencies. Next slide. So, in trying to win over corticosteroids, we have developed so many drugs so that we can mimic the action of the steroids. These include cancer. These are various classes of drugs. No point discussing each and everything. But the most common drug which is used for treatment of this mastitis is methotrexate. The most of the literature is with that. Otherwise, we have azathioprine, hydroxychloroquine, mycophenolate, colchicine. The point I want to say is that in any patient with having immune manifestations, it is not only the drug which is important. We have to find out what drug is suitable for the patient. As Dr. Sudhi said, that most of these patients are lactating females who want to breastfeed their babies. So in those patients, it is almost impossible to give methotrexate. So we need to, and then there might be patients who might be willing to plan another pregnancy. So in those cases, we have to be careful on selecting of the drug which we want to use. For example, if we look at this chart, in this,
probably only one or two drugs are compatible with pregnancy, which include azathioprine, which includes cyclosporin, tacrolimus, and hydroxychloroquine. Besides that, none of the medicine are compatible with pregnancy. So whenever we plan out a treatment strategy for any patient, we need to ensure we need to find out what are the factors which are involved with the patient. Then what are the organ involvement profile, what is the side effect profile of the drug, and which is suitable. Suppose a patient is having history of chronic liver disease or some liver disease, then methotrexate is a strict no. We have to look for other options. So coming on to methotrexate, which is the most commonly used drug, it can be an oral intramuscular oral drug or an intramuscular injection. Subcutaneous IV is not used for rheumatology. The dose varies from 7.5 to 25. So the dose which we use in rheumatology and immune disorders is called a low dose methotrexate. Why? Because initially, probably 40 years back, methotrexate was a anti-cancer drug, and it was used in much higher dose at that time. Once it was adopted to rheumatology, the dose was reduced, and people found that effect is there and side effect is much less. So usual starting dose is around 10 to 15 milligram per week. Per week is important because many a times if we don't write per week, sometimes the patient might just take a weekly dose, and if it has taken a weekly dose, daily dose for 1 week, he will end up with an ICU with profound bone marrow suppression. So in every patient we start methotrexate, we tell them twice or at least thrice that you have to be very careful with the drug. Dose escalation is gradual depending on tolerability and response to treatment. And if the patient is not responding to oral therapy or there is intolerance like vomiting or nausea or some other problem, we might switch over to a parenteral IM or subcutaneous injection. As I said, there are certain relative and absolute contraindication for methotrexate, and pregnancy and lactation are two of those conditions. Then we have to be very careful with the organ, major organ profile like a renal function. If the patient is having renal dysfunction, there is a massive risk of bone marrow toxicity. In fact, when we see our practice, only those patients who have had a renal dysfunction or they have been given non-steroidal anti-inflammatory drugs because of some cause, they have ended up with a bone marrow failure. So we have to be very careful about those. Then monitoring is simple. Next slide. Monitoring is simple. The classical teaching is 2 weekly for 6 weeks, 4 weekly for 3 months, and thereafter 3 monthly. But practically that is not possible. So we manage it. We have to balance out the convenience of the patient and the cost of investigation. They recommend doing a complete RFT and LFT. That is not required. What we do in practice is CBC with the SGPT and a creatinine. These three things will suffice. If there is a major important is history. So if we have to tell them that if you have developed a diarrhea, withhold the drug. If you have some tooth, the biggest problem is dentist. So patient is having a good life, good control of the disease, and suddenly their tooth started aching, and they went to a dentist. Dentist said, "We daant nikalna padega." He gave diclofenac for 3 days. The patient ended in ICU. So we have to tell them that avoid those NSAIDs without prescription. Then coming on to adverse effects, most common adverse effects are GI. Methotrexate is a relatively quite a safe drug. It is a wide range. 10 to 15 is quite safe, but still we have to be careful. It can cause a bone marrow suppression. Hepatic involvement can be there. Interstitial pneumonitis is a big question mark. Present literature suggests that it does not happen with the methotrexate. Then other lymphomas can be associated with any immunosuppression. Then dizziness, headache, mood alteration, they can be because of acute drug. Whenever the patient takes the drug at that time, he might have some problem. So this is from a systematic review and meta-analysis.
in which they pooled all the data. They have many studies, and from there they analyzed and they found out that they compared all the therapies: oral steroid, topical, antibiotic, isolated methotrexate plus steroid, and they found that the methotrexate and oral steroid had the best response and a minimum relapse. Recurrence is minimum with these two combination. The literature, but we always need to analyze this literature with the pinch of salt, because if we look at the data which is available for this disease, this disease is not very common. Most of the studies which are there are either retrospective studies or case reports of studies with very few number of cases. So this all is not a randomized data. It is a very heterogeneous data. Some studies they have very small follow-up. Some like 3 months, 6 months. Some have a long follow-up. The patient profile is different. The genetics is different. The most of these are retrospective studies and sample size is variable. So this is data which is we can use it, but we always need to see it in the light of all these limitations. Thank you very much, Dr. Ankit. It was a very enlightening. मतलब so many things I have learned from your presentation. तो अभी हम आगे बढ़ते हैं. So now we come to intralesional steroids. So हमने क्या क्या बात की? हमने एंटीबायोटिक्स की बात की, हमने एंटीप्रोलैक्टिन थेरेपी की बात की, हमने स्टीरॉइड्स की बात की, टॉपिकल स्टीरॉइड्स की बात की और सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स की बात की, और हमने बात की इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स की, जिसको बहुत ही इलेबोरेट और बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर अंकित ने हमें समझाया. सो अब हम बात करते हैं इंट्रालीजनल स्टीरॉइड्स की. तो फ्रेंड्स, दिस इज अ न्यू कंसेप्ट, but it's a very very promising concept, because as Dr. Ankit said, though it's something like putting steroid, giving intramuscular steroids, so we are giving steroid intralesionally, so it may have some certain systemic side effects, like we cannot rule it out, but because we are putting a depot injection into the lesions, so it is a high chance कि that drug stay within the lesion for a longer duration time और वहाँ पे बहुत ही अच्छा सा targeted effect करे. So it's a sort of targeted therapy. तो फ्रेंड्स, आज जो मैं बताने वाली हूँ कि हम ये इंजेक्शंस कैसे लगाते हैं. तो इसका प्रॉपर फ्रेमवर्क और गाइड है, लिटरेचर अवेलेबल है, जिसमें ये समझाया गया है कि ये हम कैसे दे सकते हैं. तो आज मैं आपको ये लिटरेचर बताऊंगी, साथ ही साथ जो हमारे डिपार्टमेंट में फॉलो होता है उसका एक छोटा सा क्लिप भी मैं आज आपसे शेयर करूंगी. तो ये फ्रेंड्स, इसमें व्हाट वी यूज इज अ ट्राइमसिनोलोन इंजेक्शन, ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड. ये एक लॉन्गर ड्यूरेशन स्टीरॉइड है और 1 ml में 40 मिलीग्राम के करीब आता है. तो इसमें क्या होता है, यूज स्टैंडर्ड टेक्निक टू एडमिनिस्टर लोकल एनेस्थेसिया. सो व्हाट इज रिकमेंडेड तो है कि आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड करो, बट मेनी टाइम अल्ट्रासाउंड आइदर फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल और ड्यू टू एनी अदर रीजन. सो व्हाट वी डू इज द finger guided. So best is ultrasound guided. So what is recommended कि you do ultrasound, suck out all the abscess that is there, wash करो cavity को with sterile normal saline, and उसके बाद inject करो steroid. तो ये steroid का जो dose है, and it is recommended that you put a local anesthetic, infiltrate the skin with a local anesthetic so that it becomes a painless procedure for the patient. और इसमें जो ट्राइमसिनोलोन है 40 मिलीग्राम पर ml अवेलेबल होता है, 5 ml में भी अवेलेबल होता है 200 मिलीग्राम. तो जो रिकमेंडेड डोज है, इट शुड बी द मैक्सिमम डोज इज should not be more than 200. Otherwise 1 to 2 vial like 40 to 80 milligram per sitting is sufficient for us. तो इसमें भी this drug is very thick. तो जो रूटीन हमारा 10 ml syringe के साथ needle आता है, usually it is difficult to aspirate the content into the needle through the fine needle. So it's always wise that we use either 16 gauge needle or 18 gauge needle, and with that we prepare our solution. So we use a local anesthetist, जैसे lidocaine हो गया या bupivacaine हो गया, that you can use, and mix it with the triamcinolone and then you inject. So this at one sitting, this sitting we can repeat in 2 to 3 weeks, 2 से 3 हफ्ते या मे बी मैक्सिमम 3 से 4 हफ्ते में रिपीट करने से आपके साइड इफेक्ट्स कम रहेंगे और इफेक्ट आने में अच्छा हमको ड्यूरेशन मिल जाएगा. और पर सिटिंग डोंट फॉर अ 70 kg adult हमें 70 ml से ज्यादा नहीं लेना है.
मतलब लाइक 35 to 70 ml के करीब हम आराम से ले सकते हैं, बट यूजली वी टेक अ स्मॉलर डोज। दूसरे उस आर्टिकल में एक बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि हम इसको जब भी अल्ट्रासाउंड करते हैं तो यहाँ कुछ एरियाज होते हैं, हम इस तरह से उसको मार्कआउट कर सकते हैं कि वेदर सिंगल है, मल्टीफोकल है। दूसरे हम उसकी डेप्थ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि सुपरफिशियल 1/3 है तो इट इज D1, मिडिल 1/3 है तो D2, लोअर 1/3 है तो D3, अगर D1 और D2 इन्वॉल्व है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग आई फाउंड, विच आई थॉट कि आई विल शेयर विथ यू। तो ये सारी डिटेल आपको इस आर्टिकल में मिलेगी, विच आई विल बी शेयरिंग लेटली आफ्टर द प्रोग्राम। तो अगर एक सिंगल एरिया इन्वॉल्व है तो 40 मिलीग्राम, आपके 2 एरियाज इन्वॉल्व है तो डबल कर दो 80 मिलीग्राम, तीनों एरियाज इन्वॉल्व है तो 160 मिलीग्राम के करीब हम आराम से दे सकते हैं। हम आराम से दे सकते हैं। एंड फ्रेंड्स प्लीज माइंड इट, लाइक आई हैव अ वेरी गुड पर्सनल एक्सपीरियंस यूजिंग दिस इंट्रालीजनल स्टीरॉइड। और जो पेशेंट का जो डिस्चार्जिंग पस होते हैं कुछ, दे ऑलमोस्ट डिसअपियर इवन आफ्टर फर्स्ट इंजेक्शन। तो ये कैसे लगाते हैं इसको मैं आपको एक छोटा सा वीडियो में अभी दिखाती हूँ और इससे आपको आइडिया लग जाएगा। These are the so this was a very small small lesion in the breast जिसको we were managing, and the patient was very apprehensive कि उसको कैंसर ना हो। We after ruling out everything, then we started the therapy, and our first priority was to give intralesional steroid. Now her lesion is very small, very well managed, and this was the therapy that we gave to her. Okay, now coming to surgical management. तो intralesional steroid आज आपने समझा कि कैसे दिया जाता है, मैक्सिमम डोज क्या होती है, कौन सी दवाई दी जाती है और किस तरह से लगाया जाता है। अब हम आते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट का जो रैशनल है वो ये है कि आफ्टर डाउन स्टेजिंग द डिजीज, जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल हम डाउन स्टेज कर सके, उसके बाद जो कोर फोकस एरिया है हम अगर उसको निकाल देते हैं तो फिर डिजीज है वो जड़ से खत्म हो जाती है और बार बार रिकरेंस का रिस्क नहीं आता है। बट क्या होता है, इट्स अ वेरी, ये भी बहुत ही प्रॉमिसिंग टेक्निक है, बट प्रॉब्लम आती है कि ज्यादातर केसेस में बहुत एक्सटेंसिव लीजन होते हैं, इसलिए इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो वी आइडेंटिफाई द एरिया, वी डोंट लेट एनी इन्वॉल्व्ड एरिया, वाइड लोकल एक्सीजन फॉलोड बाय ऑन्कोप्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन दैट वी कैन कंसिडर। बट सर्जरी इज नॉट द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। इट्स नॉट लाइक कि ऑन्कोप्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन करना है तो हम बड़े लीजन्स पे भी वी ऑलवेज ट्राई टू डाउन स्टेज, वी मस्ट ट्राई टू डाउन स्टेज एज मच एज पॉसिबल, एंड देन देयर आर सर्टेन स्पेसिफिकेशन। जब इस तरह का कोई कंडीशन होता है देन वी रिसोर्ट टू सर्जरी। ये स्लाइड ऑलरेडी डॉक्टर अंकित ने दिखा रखी है, जिसमें कि हमने ये देखा है कि अगर मेथोट्रेक्सेट और ओरल स्टीरॉइड्स को देते हैं तो रिकरेंस रेट काफी कम होता है, जो बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें हम सर्जरी भी और ऐड कर देंगे तो शायद हमारा रिकरेंस रेट और कम हो जाएगा, बट ये केस टू केस बेसिस पे हम डायग्नोज करेंगे। तो अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो मैं शेयर करना चाहूंगी। हमने जितनी आज बात की है उसको काफी कुछ अच्छे तरीके से इन्होंने समराइज किया है। ये एक सिस्टमेटिक एनालिसिस है जिसकी डिटेल मैं आपको शेयर करूंगी। सो बेसिकली अगर कोई भी पेशेंट, अब मैं आपको कंक्लूड कर रही हूँ सारी चीजें, अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट लीजन के साथ, सो इंपॉर्टेंट है आप 2 चीजें करेंगे, एक लैब एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड। लैब में आप चेक करना चाहेंगे उसके थायराइड को, उसके प्रोलैक्टिन को, उसके सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, अनका, ये सारी चीजें, एएनए, रूमेटॉइड फैक्टर्स, ये सारी चीजें आप चेक करना चाहोगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन और ईएसआर। तो अगर उसमें आपको प्रोलैक्टिन हाई मिलता है तो आप उसको एंटी प्रोलैक्टिन थेरेपी देंगे। साथ ही साथ आप अल्ट्रासाउंड करेंगे। अब इसमें 2 चीजें देखेंगे, अगर आपको लगता है एब्सिस है तो आप उसको एस्पिरेट करेंगे, उसके एब्सिस के जो भी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस होने हैं, टीबी रूल आउट करना है, नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन रूल आउट करना है या कोराइनी बैक्टीरियम, दैट विल ट्राई टू डू। साथ ही साथ अगर सॉलिड मास मिला तो हम उस सॉलिड मास से बायोप्सी लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर एब्सिस मिलता है तो हम उसमें से कोराइनी बैक्टीरियम को चेक करने की कोशिश करेंगे, उसके एंटीबायोटिक देंगे, और अगर वो टीबी मिलता है तो हम एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देंगे, और अगर सपोज कुछ भी नहीं मिलता है तो फिर हम कन्वेंशनल, तब तक बाय द टाइम 4-5 days में वी ट्राई टू मैनेज दैट पेशेंट विद कन्वेंशनल एंटीबायोटिक्स। इफ देयर इज नो रिस्पॉन्स देन वील सी कि अच्छा क्या इसको सॉलिड मास से कुछ बायोप्सी या कुछ भी अगर हमें
indications मिलते हैं, then we label this patient as GLM. So many time it happens कि like हम multiple therapies और थोड़ी सी anti-tubercular treatment भी दे देते हैं इन patients को, and the treatment जो हम treatment है वो देते हैं. So this is another a flow diagram related to the same thing what I said. Now I request our respected co-guest Dr. Anurag Srivastav sir. Sir is now going to share his experience and few of his students are also with us. तो वो हमें बताएंगे कि ऑल इंडिया में ये जो इन्होंने सर ने स्टडीज की है उसमें किस तरह का प्रोटोकॉल सर फॉलो करते हैं. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न फ्रॉम दिस. थैंक यू सर. सर ओवर टू यू. Namaskar, and my greetings to Dr. Anand Mishra sir, and thank you for joining, and Dr. Sudhi for the opportunity. So you have very nicely presented the whole scenario and the confusion that prevails in the mind of doctors about the proper management. कि जैसे आपने कहा कि टीबी है, कि एंटी ट्यूबरकुलर देना है, कि पेरिडक्टल मेस्टाइटिस है उसके लिए मेमोरी डक्ट एक्सीजन करना है, या स्टेरॉइड देना है, मिथोट्रेक्सेट देना है आजकल, और इम्यूनोसप्रेसेंट्स देने. तो दैट इज द रियल डिलेमा, एंड वी वर जस्ट परप्लेक्स्ड विद दिस चैलेंज. सो वी थॉट वी शुड हैव सम न्यू अप्रोच. सो आई केम अक्रॉस अ डिसीजन एनालिसिस अप्रोच फॉर animals in cattle. There was one study on cattle, but no human study available on management of non-lactational mastitis by this approach. So we just thought about it and talked to some epidemiologists and our clinical incline group, and then together with our pulmonary medicine experts, Dr. Randi Guleria was the director at that time. You know, he was the chief of the pulmonary medicine. So we made a team like MDT for cancer. So it's a multidisciplinary team with experts from tuberculosis. You know, throughout the India, chest and TB, it used to be called chest and TB department. Now it's called pulmonary medicine, more fanciful name. But they are the expert of treating both typical as well as atypical mycobacteria and all sorts of complications of tuberculosis. So we took them in our team. So two professors from pulmonary medicine, and then the pathologist, radiologist, and our surgeons. So this was our team, and every patient with suspected non-lactational mastitis, which means in any inflammation in the breast more than 6 months after cessation of the lactation. So that is the definition of non-lactation mastitis, because within 6 months from cessation of lactation, it can be some after effect of the hormonal or blood flow or structural changes of lactation. So after 6 months of cessation of lactation, any inflammation is called non-lactation mastitis, or in nulliparous girls prior to any. So we took this, this was the recruitment of the patients, non-lactational, and after detailed history and other things, then we discussed with our pulmonary medicine experts, and then we carried out some investigations to rule out tuberculosis. So like HRCT, high resolution chest CT, and MON2 test. So if there is active tuberculosis, one of these will pick up. And if there are any chest symptoms, they also did say sputum culture sensitivity. And any fluid was also sent for AFB, for gene expert, and culture of tubercular bacilli. So this was the whole management. And so I now request our very bright breast and endocrine surgeon, who has she passed the MCH breast and endocrine only, I think, day before yesterday, Dr. Deepti Singh. So she is still connected. Dr. Deepti, are you there? Hello. Deepti is there, I think. Hello. हाँ, आप connected हैं? Good afternoon. Good evening, sir. Good evening, everyone. So it is your baby, your work. So why Yes. don't you present? So she worked very hard on this study. So please, Dr. Deepti, please present the rest of the presentation. I have introduced you, very bright, intelligent breast and endocrine surgeon. So present this work, please. Thank you so much for the introduction, sir. Thank you so much.
So this was actually carried out as my thesis, where we recruited patients that had granulomatous mastitis, as well as patients who had chronic as well as acute on chronic mastitis. So every patient with mastitis who presented to our OPD was taken into the thesis. We took a detailed history. We did a clinical examination. The first investigation that we conducted was ultrasound, and a mammogram was done in all ladies that were more than 40 years of age. And like it has already been detailed in the previous talks, we did get a pus culture, AFP staining, gene expert, as well as a liquid culture whenever it was required from any discharging sinus. And patients that presented with a lump, we got a true cut biopsy done to look at whether it was a granulomatous mastitis, whether it was tuberculosis, or whether it was just a simple acute on chronic mastitis or that. So we recruited a total number of 69 patients, out of which, the unit in our study was an individual breast because some of the patients had bilateral disease. So the total number of units was 78. Can we move to the next slide, sir? Sure, sure. So we had an overall cure rate of around 92.3%, where we saw that we had in 6 of our units, we found a recurrence out of the total number of 78 recruited patients. So what's important here, so what we wanted to emphasize was that in patients with granulomatous mastitis, where in a country like India, they are just empirically started on antitubercular treatment, we wanted to emphasize that ATT should not be given indiscriminately like that to anybody who presents with granulomatous mastitis. So we had a total of 25 patients of granulomatous mastitis that were proven histopathologically. And out of these patients, 14 units were given ATT. And the remaining, for the remaining 11, we did not give them ATT, and we tried to manage them either with long course of antibiotics, where some of them responded, or we had to resort to giving steroids to 3 of our patients who did not respond with a long course of antibiotics. We also had to perform some radical duct excisions. So we performed a total of 17 radical duct excisions with a cure rate of 76%. So this was done in patients that presented to us with chronic non-healing, either fistulas or patients that had severe periductal mastitis. They had subareolar abscesses or sepsis, or patients that presented with persistent nipple discharge that did not get better with any of our treatment. So next slide, ma'am. So as we can see in this flow chart, so we basically, based on the history and clinical examination, we divided our patients with those that had a palpable lump, that did not have a palpable lump, and that only had thickened ducts on the examination. For the patients that had a palpable lump, there was a group that had an abscess and a group that did not have an abscess. So out of the patients that have had an abscess, we divided it into whether aspiration was possible or not possible. So for the ones where aspiration was possible, we sent the pus for culture, AFP, and gene expert staining. And if any patient had gene expert positive, they were naturally given ATT. If the gene expert was negative, we gave them, managed them with antibiotics for either less than 3 weeks for the ones who resolved, or for more than 3 weeks for the chronic patients that had persisting inflammation. सबका खत्म हो गया, बस वो क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर करना पड़ेगा. ये ले आजा. अरे Sure, ये ले. sir. Yeah, Dr. Ankit, I think your mic is Sorry. yeah. So for the patients that did not have an aspirable pus, we performed a tissue diagnosis if that was possible. And based on this, the patients were divided into either having an acute or chronic inflammation. That was a simple inflammation. Either those that had granulomas, that was granulomatous, which were non-caseating, non-necrotizing, or the patients that frankly had tuberculosis, either in the form of caseating granulomas or in the form of where AFP was detected. And then accordingly, in the patients that had granulomatous mastitis, we further went ahead and did a manto, as well as the main thing that we added to our flowchart was getting a CCT chest, abdomen, and pelvis done. So we got that done additionally in patients who had granulomatous mastitis that were not tuberculosis. So in these patients, if any patient had evidence of TB, either pulmonary TB or like in one of our patients, they had abdominal TB as well, where there were periportal lymph nodes. And retroperitoneal lymph nodes that were FNAC'd and they were picked up as tuberculosis. So in these patients specifically, ATT was given that were granulomatous, not otherwise tubercular. And in the patients that were tubercular on histopathology, naturally we started them on ATT.
And as we can see in one of the limbs lower down, we saw that if the patient had gene export negative and antibiotics, we gave them antibiotics. And in these patients, even on long-term antibiotics, if the patient had a recurrence, we had to go ahead and do radical duct excisions. The next, if you can just go to the, for the patients with no abscess. So for the patients that did not have an abscess on presentation, we saw whether they had a discharge or not. If the discharge was there, it was sent for pus culture and staining. And if the discharge was absent, we got a tissue diagnosis done, and the rest of it was very similar to the flowchart that I previously spoke about. Next slide, ma'am. So this was just the flowchart. This was the research and analysis that we did. Then coming to the patients that had no palpable lump but only had an inflammation clinically. So in these patients, like I said, everybody was subjected to an ultrasound, and if on ultrasound we saw that they had a lump or an abscess, a similar flowchart was followed, like I already spoke, where biopsy or aspiration was done. For the patients that did not have an abscess even on ultrasound and they only presented with inflammation, in these patients they were given antibiotics and managed with just either a short course or long course of antibiotics. For the patients that had only thickened ducts, we did not take them as mastitis. We considered them to just have ductectasia. We got a culture done in the patients that had a nipple discharge, and usually it was sterile. And so in these patients, all of them were successfully managed with a course of antibiotics, which was either a short course that was less than 3 weeks, or some patients needed a long course of antibiotics of more than 3 weeks. So next, ma'am. Move to the next slide. So this is just a summary of everything that all of our data. So basically the number of patients in each limb is eventually very less. But then we did try, because the number of patients coming with granulomatous mastitis is not so much that we can have many patients in each limb. So we naturally need to either recruit multiple centers or do it over a longer period of time so that we have significant numbers to make our data significant. But as we can see that in these patients, majority of them presented with a palpable lump or a clinical abscess, and out of these, 24 were granulomatous mastitis, out of which 12 were non-tubercular and 12 turned out to be tubercular. And out of these, like I already mentioned, 17 patients in total required a radical duct excision. So what we noticed was out of the 3 patients that we gave steroids to, 2 of them responded very well. But like it has already been mentioned in the previous talk, the patients with steroids did develop a lot of side effects. So they all had weight gain. All 3 of them had weight gain. One of the patients had deranged blood glucose levels, and the therapy had to be terminated at 2 to 3 months itself because the patients were not able to tolerate it. And one of our patients who took steroids, that is the 3rd patient, she was already managed with multiple antibiotics. We gave her steroids. It did not settle. We did a radical duct excision, and the histopathology was granulomatous mastitis. She still did not improve. She came back with persistent discharge. And then we finally had to give her ATT, even though throughout the course, there was no evidence of tuberculosis, either even on the histopathology or even on the multiple cultures. Finally, she had to be given ATT, and she did respond to that. So this was one patient that we saw that was managed without ATT, but then she kept coming back with recurrences, eventually requiring ATT. But that is, again, like I said, it's a very small number. It's just 1 patient here and 1 patient there. So it's too small numbers to generalize the findings, but we would love to recruit more patients so that we can take it further. Next slide. This is the last slide. Okay. So that's... Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. It was a wonderful study, sir. So I would like to summarize Dr. Deepti's presentation as follows. Yes, sir. We should follow, cancer, we should follow an MDT approach. So where we gather experts who deal with tuberculosis, and if there is suspicion of immunological condition, then immunologist, as Dr. Ankit in your group. So that is very important. Do a multidisciplinary approach. All experts see the patient, evaluate the images, and if needed, HRCT for chest and Montu test or other features of tuberculosis must be carried out. If a patient responds, well and good. So in this approach, you can see that very few patients, actually I think total 17, if I am correct, Dr. Deepti, only 17 patients did receive anti-tubercular drugs out of 78 breasts or 69 patients. So by selective approach,
you can actually limit the number of patients who will actually require this anti-tubercular. Second is only 3 ladies were treated by corticosteroids. So if you follow this approach, very few patients will be really needing steroids in the long run. And as you are suggesting, we can do intralesional steroids, Canacort or some other long-term steroids. So that will be a wonderful study, which will reduce the side effects, systemic side effects. The few other points I would like to tell the audience. A very famous breast surgeon called Dr. Charles Darrow Higginson from Philadelphia. He gave the Columbia classification of breast a long time ago, like Manchester classification in England. So Dr. Higginson wrote a very nice sentence about this idiopathic granulomatous mastitis and periductal mastitis. That is, the unique thing about this mastitis is the promptitude. I am quoting his words: the promptitude with which the inflammatory mass appears and the rapidity with which it disappears. So you see the patient, there is a lump, tender, usually deep to areola central lump, and within just 3-4 days, just 1 week, the whole lump will disappear, whether you give antibiotics or whether you give steroid or not. So that's a very unique thing about this granulomatous mastitis or periductal mastitis. Other thing is, this is called evanescent mass. So Professor Hughes and others used to call it evanescent. If you read Professor Hughes' book on benign breast disease, that he has mentioned the term evanescent mass. That is, evanescent in English means quickly fading away. So whether you give antibiotics or you do surgery or no treatment at all, the mass will disappear. And there are few causes for evanescent mass in the breast. The commonest cause is periductal mastitis or granulomatous mastitis. Second cause is a cyst which ruptures. Suddenly, the lady has a lump for a long time, and cyst will rupture and the lump will disappear. Third cause is a galactosele. The lump is there, and after lactation or during lactation, and the lump will disappear. The galactosele ruptures and the lump disappears. So how a medical student or a doctor should distinguish these three? Very simple. In galactosele, there will be history of lactation, either present or recent past. When the cyst or galactosele ruptures, the lump disappears but pain appears. Why? Because the cyst fluid or the milk leaked out into the tissues, parenchyma, causes some degree of inflammation. As you said in the etiology of, the release of milk out of the duct causes inflammation. So, cyst and galactosele, lump will disappear, pain will appear, pain and inflammation. In periductal mastitis, the lump, the pain, the redness, rubor, dolor, color, everything will disappear. So that's how you can distinguish between the evanescent mass of a periductal granulomatous mastitis and that of cyst rupture. The one thing also in ultrasound we should note that there are 2 stages of any abscess. One is called pre-suppurative stage, before liquefaction necrosis occurs, and then the actual suppuration, liquefaction. So in the pre-suppurative stage of inflammation, actually lesion looks hyperechoic. So we were taught in radiology classes that there are 2 conditions where the breast lesion appears hyperechoic. One is inflammatory mass, other is resolving hematoma. All other breast lesions, cyst, fibroadenoma, phylloids, cancer, they all look are hypoechoic. So all breast lesions are hypoechoic. Only 2 conditions are hyperechoic. One is inflammatory mass, because there are a lot of cells, edema. So all this increase the echogenicity of the lesion. And other is resolving hematoma. So 2 conditions which are hyperechoic. So if you see a rubor, dolor, color and indurated tender mass, usually retroareolar, and you put the ultrasound probe, you find some echogenicity, localized echogenicity, you are dealing with a pre-suppurative stage of inflammation. And sometimes you can trace the milk duct fistula. You can put the probe, you find an abscess cavity, keep tracing, and like जैसे वो अगर आप जू में जाइए तो एक वो ऑटर एक एनिमल होता है ना, जैसे उसको क्या कहते हैं कि हाँ, ऊद बिलाव या गिलहरी जैसा जो होता है ना, दूसरा जो नेवला जैसे नीले का या ऊद बिलाव का वो होता है ना, एक बिल से जाता है वो दूसरे से निकल आता है, या चूहे का भी,
तो वैसे ही sometimes multiple discharging sinuses can be seen, and you can trace all those tracks up to the skin, up to the milk duct fistula with the ultrasound. So that's the beauty of ultrasound. And if you have milk duct fistula, that is a sure certain indication for duct excision. So there are certain indications for mammary duct excision, either whole Hatfield-like excision or single duct in nulliparous girls. You don't want to remove all the milk ducts. So in nulliparous girls, just remove the culprit 1 or 2 ducts, but by microductectomy. And in those ladies who have completed their family, 30, 35, then you do Hatfield operation. A lot of studies have shown that you don't have to remove 3 centimeter of duct or 5 centimeter of ductal cone. Just 1 to 1.5 centimeter of ductal cone excision is good enough. And we have done actually a randomized trial. The first study was Dr. John Dixon from Edinburgh. Dr. Dixon is famous for introducing aspiration of abscess. Prior to that, everybody was putting knife and doing incision and drainage for all abscesses, not just breast. But Dr. J.M. Dixon from Edinburgh, he said, no, you can aspirate the pus and treat it by antibiotics. So Dr. Dixon has shown that the infection and inflammation in periductal mastitis is confined to terminal 1 centimeter of the nipple. So you don't have to remove too much of ductal cone. Just 1 to 1.5 centimeter of ductal cone removal is good enough. And we just published a randomized trial where we randomized ladies who had periductal mastitis, either 1.5 centimeter of duct excision or 3 centimeter. So 1.5 centimeter is good enough in controlling features of periductal mastitis. So just limited duct excision in ladies who have a central type of inflammatory mass, and there is fish mouth, classical transverse slit-like or fish mouth type of retraction. This is classically seen in periductal mastitis. Dr. Sandeep Kumar, Dr. Mansell, Dr. Hughes keep teaching fish mouth retraction in periductal mastitis. If you see that and ducts are thickened on palpation after 2 weeks of antibiotics, then when the inflammation has subsided, the redness has gone, then that is the time you should perform limited mammary duct excision. Just removing 1.5 centimeter of ductal cone is good enough. Yes, sir. So Thank you very much for these insights. So there are, sir, couple of questions I would like to understand from the study. The study was really very interesting. But before that, I would like to ask, Anand sir is with us. So Anand sir, is it comfortable? I know you are traveling, but is it comfortable if you can? No. Thank Sudhi, you. I'm there. And thank you. And good evening, Dr. Anurag, sir. Namaskar. So, Sudhi, Namaskar. Ji, sir. Thank you for Sir, joining. sir. Thank you for joining. Yeah. So, first, Sudhi, I would like to congratulate you for taking this difficult task of discussing idiopathic granulomatous mastitis. It's a very difficult condition for doctors, and as well as it is very difficult condition for the patients. And most of the points you have elaborated, and obviously it affects quality of life. I will say we have to rule out malignancy, but then it affects quality of life. It has a waxing and waning course, which Dr. Anurag explained very well. Sometimes the lump, it may decrease, but definitely patient needs a treatment. We cannot leave the patient that it will go away. The lump will go away. And most of the point, I think, treatment, pathology, investigations, you have covered very beautifully. For me, when I see a patient of granulomatous mastitis, obviously we have to rule out whether it is idiopathic or not. Once we, by exclusion, we have made a diagnosis of idiopathic granulomatous mastitis, then there are definitive protocol treatment options which we follow in our department. Definitely, we give these patients one of the antibiotics which you discussed, depending on choices and depending on maybe, but not always we give the antibiotic. But if there is inflammation and we feel that patient needs an antibiotic, yes, if there is an antibiotic. With that, we use, most of the time we use steroids. And if lump is small, there are not much sinuses, then we use this ultrasound guided topical steroid, intralesional steroids. Otherwise,
there may be a combination. If it may be an oral steroid as well as intralesional steroids, we give intralesional steroids 2 to 3 weeks away, and usually 2 to 3 sittings where these patients require. Now we continue this treatment for 6 weeks, maybe, depending on how patient's lump is progressing. And then once it has stabilized, that lump has stabilized, it has decreased in size, and then sometimes we do the rest. Surgery comes into the picture only after that. I cannot say you that we do surgery in all these patients, but if it is not decreasing, it is stable, then we can go for the excision for the residual lesion. And you can offer these patients oncoplastic procedures. You plan these patients by oncoplastic incisions. So it's basically a medical treatment. You have to recognize the problem, discuss the problem you have with the patient, and initially when you're starting these treatments, you have to discuss a lot with the patient that तुमने बहुत शुरू में बताया था. Patient will go from one doctor to other doctor, so patient has to understand that there will be a waxing waning course and a long course. It is a benign disease, not a fatal disease, not a cancer, but it will be a difficult problem for treatment for both doctors and the patients. We need to explain this initially 2-3 sittings. You need to explain each and every time so that patient is assured of the treatment and he continues with the treatment. Yes, sir. Thank you very much. And I think the whatsoever you have told is exactly what is there in the literature, the systemic reviews, and it's बिल्कुल protocol wise treatment you are doing. Sir, thank you for sharing that. Sir, antibiotic कौन सा use आप लोग करना चाहते हैं? मतलब like which antibiotic you prefer? It's not always. देखो, if patient has redness, erythema, those all features, or systemic features of inflammation, then obviously it may be, because sometimes these patients have superimposed infection also, and skin bacteria are also there. So cloxacillin, amoxiclavulanic combination can work. Sometimes if you feel that skin commensals are there, streptococcal infection is there, then you can have megazolid. Otherwise, if it is sterile and pus is sterile, then obviously the choices you have discussed, they may be a candidate for sure, as antibiotic. Okay. So, sir, would you like to add, sir, Anurag, sir? Yes. So regarding the choice of antibiotic for this, we had long discussion with our pulmonary medicine experts. So previously we were using ciprofloxacillin and tinidazole combination, because in periductal mastitis, there's a lot of data to show that it is a mixed flora of Staphylococcus, gram-positive cocci, and anaerobes, Bacteroides fragilis or Fusobacteria fusiformis. So to cover that, metronidazole has been used and described in the West, but it causes metallic taste, and you have to give 3 times a day. So we switched to tinidazole, which is 200 milligram, 500 milligram twice a day, morning and evening. With tinidazole, the metallic taste is less, so it's better tolerated, and only twice a day therapy. And they said, the pulmonary medicine experts said, do not use ciprofloxacillin, because all the cloxacillin, etc., the quinolones are second line or third line anti-tubercular. So if you are using ciproflox, some of the tuberculosis may also suppress. So do not use that unless you have proven tuberculosis. So then we switched to cefexime. Cefexime is 3rd generation cephalosporin, oral 200 milligram twice a day. I think common preparation available here in North India is Taxim-O, 200 BD. And so it is very well tolerated, no nausea, vomiting, and gastric upset is also much less. With Mclox or amoxiclav, one problem is that of gastritis and tolerance, and other is that if you have MRSA, then it is not very effective. So just that, but do cover for anaerobes for at least periductal mastitis group, because it's a mixed flora.
Other thing I would like to tell about my guru's experience, Dr. Sandeep Kumar has been using Char Sutra, Ayurvedic preparation. So he puts the Char Sutra dhaga into the sinus. And if there are two openings, then he will pass from one to other like fistula in nano. And he has good experience of healing of some of these sinuses, granulomatous mastitis sinuses by Char Sutra. That's a very, very good information. So thank you for sharing. I have worked with Sandeep sir. We were using it for fistula and nano, but this Now time he is using for breast also. Yeah, that's very Yeah, he told very me. informative thing that you have shared. Sir, my question to both of you: do we regularly, because you have worked in a very high volume tertiary care centers, so do we send the abscesses for specifically for Corynebacterium also at your centers? No, no, no. Did I we do ever not know try? much Not about not it. so deep. I No. think it is not needed. Most of the time, it is not needed. I mean, this culture is not needed. Okay, so But it's a good information. Now onwards, we will look for it. So, is there a special technique or a special culture medium जिसमें भेजना है? I think Chani can answer this. Chani, हाँ. would you like to give your inputs? तो जो कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेजते हैं हम लोग, And what बस is the culture cost उसी if में हो जाएगा कि we अलग worked से out? होगा So what coordinate? is the I think approximate cost? you'll have to coordinate with your microbiologist because it is not routinely done, but Okay. protocol can be made. Basically, the culture has to be lipophilic because Corynebacterium is a lipophilic bacteria. So अच्छा. 280 is the name of the Okay. culture media. So that should be added, 280. and the incubation period should be longer. At least 5 days we have to observe because it is a very difficult. Centering will. So it's a special testing. Yeah. So now And, maybe now some- onward we will do that. Thank you. Thanks for the information. We are I also will planning look forward. we are also planning to start at our center so that routinely we just collect our own data ki in how many cases Got this it. comes out to be positive. So I think in gram positive gram staining also can give us some Yes, idea it is as a well. simpler method. We can go for gram staining also. Then Yes, so the gram staining is mass culture, pus culture sensitivity, and gram staining. I think if facilities are available, one should do because that will give you an idea what patient needs an antibiotics or not. Because this is a multi-drug treatment. Patient you are giving, and if you are giving steroids, with that steroid you have to give PPI. Then supportive drugs are also needed. So antibiotics if needed or not. So and it has to be it is a long duration treatment. Patient is always concerned. I am taking so many drugs and it is not healing. So obviously, if you have a facility, you should go for culture so that you can be evidence based for antibiotics choice. Yes, sir. Thank you very much, sir. Anurag sir, I would like, in fact, Anurag sir and Anand sir. So, what are your criteria? Like, sir, in your study, did any patient of IgM, idiopathic granulomatous mastitis, ultimately undergone surgery, or all Yeah, of them were periductal- managed medically only? Yeah, if the lesion was located centrally, we performed a major mammary duct excision, head field operation, right? And for peripheral lesions, sometimes we have to do just curettage. If abscess was not resolving, curettage, but not major excision. We did not do. But some people have, like Dr. Deepten Sarkar has suggested in Calcutta, IPG Calcutta, that he suggested that you excise the lesion and go to the duct, to ductal excision along with that excision of the abscess cavity. He has been doing. And I think Dr. M.J. Paul in CMC Vellore also has been doing this study. So they also suggest some kind of excision of the cavity. Thank you very much. Yes, sir. So, Anand sir would like to add, sir. So we do. I told you that we will give medical treatment, and then if there is a residual lesion, we will do the excision. So you think like if the patient may either failing the medical treatment, not completely cured, or there are some features of it is not failing of the treatment. Sometimes you get complete response, sometimes you get a partial response. So if you get a partial response, means 20 to 30% all inflammation and size has decreased, and the mass is continuing. You see with the ultrasound, then you go for an excision. It's a like that. Great, sir. Great, and thank you very much. Now we have shooted our time, and time कैसे निकल गया हमें पता भी नहीं चला. And to confess, I learned a lot
while preparing this presentation and while discussing with all the faculties. And as a protocol, by 9 o'clock we wind off the meeting, and that was really an exhaustive discussion. Learned a lot from you. And with this, if there is any quick question, if any one of our participants would like to ask from our faculty, so we have another 2 to 3 minutes. So if anyone want to ask anything, can please May I ask? or Ma'am, I'd like to ask something yeah, please, Shani. from Dr. Anand sir. If Yeah. a patient is having non-necrotizing granulomas and CB-NAT and AFB is negative, so in a highly endemic country like India, should we go for an empirical ATT, or is it safe to go ahead with the steroids? Sudhi, can you repeat the question? I missed Yes, something. so the thing is, what Chani is asking, so the things are not always black and white. So many a time we do get a gray zone where the patient, any test related to tuberculosis, what we do is negative. So CB-NAT is negative, PPD is negative, Montux is negative. So we don't find any features suggestive of tuberculosis. But still, because in India, tuberculosis is very, very common. Granulomatous mastitis, IgM, is also common. So what she's saying, in endemic countries, suppose a poor patient comes and we have a very high clinical suspicion of tuberculosis, but none of the tests that we are advising is coming out positive, giving us any evidence of tuberculosis. Should we first give anti-tubercular treatment in such patients to see the response, or we start switch to steroid? Because steroid therapy is also not a safe therapy. No, I am not going. Okay. Very good question. Dekho, there are few points. When you are reading the core biopsy report, it gives you a lot of information. So most of time, these granulomas are non-caseating granulomas. You have multinucleated giant cells, you have plasma cells, and then chronic inflammatory other three features. But there will be no features. No evidence of caseation. Obviously, if there is no features of caseation, and then second point, you have to understand that tuberculosis is a notifiable disease. Now, we cannot directly go for tuberculosis. So if you still feel, yes, 3 to 4 weeks trial can be given, but it has to be by the under physician. The person who can give anti-tubercular drugs. So most of time now, last many years, initially we used to write these tuberculosis drugs as a surgeon, but last many years when this disease has become a notifiable disease, so you should not write. Maybe you will land up with the problem. So you have an opinion with the physician. If physician feels that we can give a trial of tuberculosis, it is very fair to give a trial of tuberculosis in these patients. In any patient where you suspect tuberculosis, we were doing this thing when there was not an evidence. Now we have so many tests, but you think 10 years before, prior, we had only AFP, some other tests, confirmatory tests, if you have a bacteria. Otherwise, there was a trial. You will give 3 to 6 weeks anti-tuberculosis drugs and then see the response of the patient. So that is well-established therapy, but since it is a notifiable disease, you should not write anti-tubercular drugs unless you have an evidence. Sir, Anurag sir want to add anything? Yeah, Professor Mishra has raised a very important point. Tuberculosis in India is now a notifiable disease. Only those doctors who are certified in the district tuberculosis office, a DTO office, where in dot center, where they prescribe anti-tubercular drugs. Only those doctors who are registered in the dot center or the National Tuberculosis Program registry, those doctors can use it. Not everybody. We cannot use it, and that's the whole reason why we sat with our pulmonary medicine experts who are experts in tuberculosis, who are allowed to give anti-tubercular drugs. So that's why we are proposing this multidisciplinary approach, joint decision. As Dr. Chani was asking, should I give? No, I should consult my pulmonary medicine or tuberculosis expert, and if he does test CT and does Pontu test and other tests, and then he comes to the conclusion that yes, it is 90% chance of tuberculosis, then he can prescribe, not us.
ओके सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझ में आई कि अगर कई बार होता है कि आपको कहीं भी नहीं पता कि ये ट्यूबरक्लोसिस है, सो वी कैन गिव 3 to 4 weeks of empirical therapy as a trial to see the response, but in consultation with a physician who is entitled, who is registered to give the anti-tubercular treatment, and not surgeons or general surgeons or other things. So always involve, and similarly immunomodulators के लिए always involve a Immunologist. immunologist, rather than, because they are very well, because it's not about the effect, it's about the side effects that we Whole we should management. early identify early, हमें जल्दी पकड़ के और उसको ट्रीटमेंट दे, because it's not only about the effect कि breast में कम हो गया, but what about the handling of the side effects. It's always good कि हम experts को अपने साथ employ करें, और ताकि so that we can provide a multidisciplinary care to the patient. And with this, I would like to thank you all. It was really a wonderful, a fantastic session that we had. Learned a lot and lot. Now so many doubts about management of this very confusing, very mind-boggling breast disease has come up. Now I feel more expert, like in managing such cases, and more wise in managing such cases. And all thanks to my co-speakers, Dr. Chani, Dr. Ankit Jain, for taking out their precious time and for making this presentation so fruitful. And no mention the thanks I would like to pay to my co-guest, Thank you. to my chief guest, Dr. Anurag sir and Dr. Anand Mishra sir. I always learn from them. I always utilize any possible opportunity to bring them on my forum and learn from them, because they are expert teachers, and I'm so fortunate to have them tonight with us. And now we are formally closing this program. To announce, all the meetings are recorded and are uploaded on YouTube. So anyone who, because of any reason, because we all are working professionals, we have a family, I understand not many of us were able to attend. So these meetings are archived in our YouTube channel. The link will be shared in the Brandos group. Please keep connected in a Brandos group. Don't exit the group, because many more programs are there, many more insightful messages are going to come into the group, which will जो हमारे माइंड को थोड़ा सा और इंसाइट करेंगे और क्यूरियोसिटी जगाएंगे ब्रेस्ट और एंडोक्रीन सर्जरी से रिलेटेड, साइंसेस से रिलेटेड. और हमारा जो अगला मीटिंग होगा वो जुलाई में होगा, लास्ट फ्राइडे ऑफ जुलाई, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थायराइडाइटिस. सो एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन डीलिंग विद एंडोक्रीन डिसऑर्डर्स are most welcome. The details will be shared soon about the program. और हमारा जो अगस्त मीटिंग होगा उसमें हम कोशिश करेंगे पेरिडक्टल मेस्टाइटिस या ट्यूबरकुलर मेस्टाइटिस को समझने के लिए, उसकी और डिटेल जानकारी समझने के लिए. और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ आपके कीमती समय के लिए, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जब हमारा YouTube का वीडियो सर्कुलेट होगा तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लोग पोस्ट करने की कोशिश करते हैं. तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग इस मीटिंग को एग्जिट कर सकते हैं, इस वादे के साथ कि हम किसी ना किसी अन्य मीटिंग में फिर से मिलेंगे. यस सर. डॉक्टर संदीप कुमार को ही मिलवाइएगा अगली बार. सर प्रोफेसर संदीप कुमार. सर ने ही तो मीटिंग शुरू कराई थी जब हमने शुरू किया था. एंड डॉक्टर चिंतामणि दे आर ऑल्सो टू वेरी experienced and intelligent surgeons dealing with Dr. Chintamani from Delhi. सर का वो था ऐसी जो एशियन सोसाइटी एसोमा देहरादून में जब मीटिंग थी तो उससे पहले सर को मैंने बुलाया था. मैंने कहा सर एक बार आप भी आइए. फिर हमने उसमें एसोमा को पब्लिसाइज भी किया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको ज्वाइन करें मीटिंग को. बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद रहा तो सभी को ही बुलाऊंगी. चलिए सर, thank you very much for joining. I learned a lot today. I learned a lot from you. Thank you sir. Me too sir. Thank you sir. Namaste sir. Namaste. Good night.